So if you're going to talk about the modern novel, you are not going to ignore these three names. The first name that I've mentioned is Virginia Woolf. The second name that I've mentioned is James Joyce, and the third name that I've mentioned is Dorothy Richardson. Well, why they're different? They're different because, first of all, they are not following the tradition. The questions will be, how do you see the psychological novel? Like how the psychological novels are different than that of other novels. Okay, so आपको समझने की जरूरत है कि in this type of novel, in this genre, we find the old traditions disappearing completely. And the changes for the very first time, they are discarding everything that is conventional. Remember, in previous novels, we have the concept of time and directed their attention to exploration of the layers of human consciousness. So in modern novel, we have something that is not associated with the concept. So you need to talk about James Joyce. When you're going to talk about James Joyce, definitely you will have to mention that he was as a type of innovator. He started his career as a novelist with a realistic picture of life. So you need to mention especially his special emphasis on the exploration of the human consciousness. Whatever he is talking about in Ulysses is important. By the way, the year in which Ulysses was published, it is 1922, and that's very important question. Please do not ignore this question. So the third important question is how James Joyce, the very important name James Joyce, how he is treating realism in his novel. James Joyce is not producing anything but realism. So is it true? We know that it's not true. Realism disappears completely. So how James Joyce is producing realism? He was not. He is using stream of consciousness. So you need to answer this question, that is there basically by asking this indirect question, your questioner, the panelists, they want you to highlight the importance of the stream of consciousness. They want you to highlight the importance of a character. Our character is important in James Joyce's work. So you need to understand the role of Dublin there in the novel, how and why Dublin is always there in Joyce's novel. So these particular questions are important when you are talking about the psychological novel and James Joyce. The last important name when you will talk about the psychological novel is obviously the Virginia Woolf. By the way, Virginia Woolf, born in 1882 and died in 1941. It is very interesting that he shares the same age, same years with James Joyce. So she is trying to communicate something new from her novels. For example, if we just try to read out to the lighthouse, Mrs. Dalloway, so हमें इनमें से references काफी मिल सकते हैं in our interview. We need to talk about to the lighthouse. We need to talk about Mrs. Dalloway. Remember, I'm talking about and I'm focusing here that those people who are going for novel, they are supposed to memorize all these details. They are supposed to talk about all these things. They are supposed to read the summary of To the Lighthouse, Mrs. Dalloway, and The Waves if they're interested in the modern novels. And similarly, the reading of Ulysses is recommended. They're requested to go for the reading of Ulysses. So वर्जीनिया वुल्फ को जब आप एक साइकोलॉजिकल नॉवेलिस्ट के तौर पर देखते हो, आप एक और चीज समझने की कोशिश कीजिएगा इसके काम के अंदर जो her poetic sensitivity was a great asset to her. So she is dedicatedly working on her poetic sensitivity. And the last name that I have mentioned, और जिसके ऊपर आप जो है वो जरूर देखोगे, that is Dorothy Richardson. डॉर्थी रिचर्डसन, ये सच है कि इसको शायद हम
कंपैरिजन जब करते हैं वर्जीनिया वुल्फ से, तो शायद उस तरह से इसको हम एलिवेट नहीं कर पाते हैं, बट अगर हम इसका पेंटेड रूफ्स पढ़ते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1915 में पब्लिश होता है पेंटेड रूफ्स जो है, तो हमें ये समझ में आता है कि जो डिस्क्रिप्शन ये देती है अपने माइंड की, the stream of consciousness that Miss Richardson is using, and she is reproducing the things that is important. Her novels are truly feminine. So feminism is there, and she is trying her level best to give you the picture of the mind of a woman. So whatever is going on inside, she is depicting in her novels. So the question is कि अगर आप मॉडर्न नॉवल को तैयार करने जा रहे हो, if novel is your favorite genre, then you are supposed to prepare the modern novel as well. And the four names are important that you are supposed to remember. The first is James Joyce. The second one is Dorothy Richardson, Virginia Woolf, and हमारे पास और कौन से हैं? हाँ, तीन नाम जो हैं ये important है. So these three names should be there. एक और चीज जो है हमारे पास आ जाता है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, साइकोलॉजिकल स्टडी करते हुए नॉवेल्स की, साइकोलॉजिकल स्टडी करते हुए हमारे पास क्या कोई ऐसे नॉवेल्स भी एग्जिस्ट करते हैं कि जिनको हम रोमांसर्स के तौर पर देख सकें, जिन्हें हम ये देख सकें कि कुछ ऐसे नॉवेल 20th सेंचुरी में क्या पाए जाते हैं जो रोमांस है? तो अगर आप इस सवाल का जवाब देखना चाहते हैं, so my recommendation is we have a single name, and that is H.G. Wells, and this name is a famous name. So H.G. Wells is famous when you are talking about science romances. So in case you are going in detail and you are trying to dig every available type, genre, and question on the novel, then you need to go for H.G. Wells. That's an optional activity. So हमारे पास 20th सेंचुरी जो है या मॉडर्न सेंचुरी थोड़ी सी कम्प्लेक्स एज है, कम्प्लेक्स एज भी है, और इस एज के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके ऊपर बड़ी पाबंदियां रही थी और जो इंटरव्यू का हिस्सा होते हैं. आई एम श्योर दैट यू हैव हर्ड द नेम ऑफ B.H. Lawrence. If you haven't, you need to read some work, some pieces of work of B.H. Lawrence. Lawrence is very important name when you're talking about the modern novelist. And Lawrence achievements, we cannot just encapsulate the achievements of Lawrence in a single discussion, but we are going to discuss the important questions only. The thing is that लॉरेंस के नॉवेल्स की कहानी मंजर आम पे आती है 1930 में, 1930 में, एंड दैट टू लॉन्ग आफ्टर हिज डेथ. और वो भी इसके ऊपर क्रिटिक्स जो हैं वो जब क्रिटिसिज्म करते हैं, एक इंडियन मूवी है, उसका नाम तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, आमिर खान ने रिसेंटली उसको बनाया, उसको बैन कर दिया उन्होंने. जब उसको बैन किया गया तो वो न्यूज का जो है वो पार्ट बन गई, और अब हम सभी उसका नाम जानते हैं कि वो बड़ी अच्छी मूवी है, उसको बैन कर दिया गया. So, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है उस्मा. I'm sorry, I will not be able to answer this question here. I don't know. मैंने रिक्वेस्ट आपसे पहले भी की थी कि रिकॉर्डिंग्स को हमारा ये नंबर जो है वो डील करता है. आप इनसे रिक्वेस्ट कर लें अगर अवेलेबल होती हैं तो ये, क्योंकि इसकी कन्वर्जन और सारे के सारी अपलोडिंग जो है ये इन्होंने ही करनी होती है. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं इनको कन्वर्ट करूं, मैं अपलोड करूं, मैं देखूं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. सो इट्स नॉट माय जुरिस्डिक्शन, सो मैं इस पे कमिट नहीं कर सकूंगा. आई विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. दैट विल बी अ मिसकम्युनिकेशन. So, talking about D.H. Lawrence, after 1930 he became famous, and the very reason is इसके ऊपर criticism बहुत ज्यादा था. The question from D.H. Lawrence is, first of all, about his novels. क्यों बैन होते हैं इसके नॉवेल्स जो हैं, वो क्यों बैन रहे?
वो ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता। इंटरव्यू में हमेशा जो है वो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है। यू आर गिवन इनफ स्पेस एंड दे आस्क यू द क्वेश्चन, हाउ डू यू सी लॉरेंस इंडिपेंडेंस? Lawrence independence. So, what do you mean by Lawrence independence? Remember one thing, Lawrence was a person who was not following any school. He was not associated with any tradition. Lawrence was the person जो हमारे इंटरव्यू का दूसरा क्वेश्चन है वही इसमें मैं आपको मेंशन करूंगा, why Lawrence is famous as a person who was tradition to himself. ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, शायद आपने पहले भी सुन रखा हो। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो मुझे यकीन है कि आपको ये क्वेश्चन आपने पहले भी सुना होगा, क्योंकि काफी इंटरव्यूज में पूछा गया और आपको काफी इसके ऊपर आइडिया भी होगा, आपने इससे पहले भी इसको देखा होगा। सो लॉरेंस जो है, ये क्वेश्चन है एग्जैक्टली व्हाई वी कॉल, व्हाई लॉरेंस इज a tradition of himself, not to himself, of himself, tradition of himself. So the thing is that he was a type of fierce individualist. His slogan was altogether different than the slogans of the other. His slogan was not art for art's sake. और यही तीसरा क्वेश्चन है लॉरेंस से, and that is very interesting question. ये ट्रेडिशंस के बारे में पूछा जाता है, what do you mean by art for my sake? तो आप जानते हैं कि ये आर्ट फ्रॉम माय सेक जो है ये तो लॉरेंस ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। As a poet, as a critic, as a playwright, as a novelist, he was a person who believes in himself. And he refused it. All right, I am not going to seek inspiration from any other person. It's not my cup of tea. I'm not going to be a literary coterie. I'm not going to be a person who is going to bow his head in front of traditions or any other name. So, art for my sake, he is that individual who's an institution to himself, tradition of himself, the same question. So Lawrence is producing something and carrying forward his own legacy. You will answer your question that when he started his writing, Lawrence in 1911, he was a novelist who was occupying maximum scene in his novel. और इसके novels थीम के लिहाज से हटके थे, लव के लिहाज से हटके थे, मनी के लिहाज से दूसरों से हटके थे। लॉरेंस के नॉवल जो हैं वो ऐसे नॉवल थे कि जिनको जब हम पढ़ते हैं तो आप चाहते हो कि उसको म्यूट कर दो, किसी तरह से उसको खामोश कर दो, ये जो कुछ लिख रहा है, बट नहीं कर सकते हो। वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो चीजें वो प्रोड्यूस करता चला जाता है वो उससे पहले किसी ने नहीं की। आप लाख उसको बैन करते चला जाए। लॉरेंस ने कुछ चीजें जो थी, जो एक नॉवल को लिखने की फॉर्म थी, जो तरीकेकार था, इसने उसके साथ भी एक्सपेरिमेंट किया, इसने उसके साथ भी तजुर्बा किया। और वो क्या था? रेडिकल रोमांटिसिज्म। सी, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इट इज। आई एम सेइंग रेडिकल रोमांटिसिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर आप अपने इंटरव्यू में इसको ढंग से हैंडल कर सको, बड़ा अच्छा आपके ये जो इम्पैक्ट लीव करने जाएगा। लॉरेंस ने कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया जो पहले लोगों ने किया था, और लोगों ने कहा कि लॉरेंस ने जो कुछ लिखा वो बोल्ड लिखा। लॉरेंस एक ऐसा वाहिद राइटर है कि जिसकी मूवीज मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि इसकी सिनेमैटिक वर्जन को देखें, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ सोसाइटी के जिसपे शायद फतवे बड़ी जल्दी लग जाते हैं। अदरवाइज लॉरेंस को आप मंटो से किसी ने पूछा था ना कि यू आर जस्ट प्रमोटिंग न्यूडिटी इन द सोसाइटी, तो आंसर वाज यार आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जैक्ट पिक्चर। अब जो पिक्चर है वही मैं दिखाऊंगा। लॉरेंस को अगर आप पढ़ते हो तो आपको ऐसी ऐसी बोल्ड स्टेटमेंट्स मिलती हैं, आपको पता चलता है कि ये फॉर्म के साथ एक्सपेरिमेंट इसने किया। सो पहला क्वेश्चन लॉरेंस पे क्या था? लॉरेंस इंडिपेंडेंस, हाउ लॉरेंस वाज ट्रेडिशन ऑफ हिमसेल्फ, व्हाट डू यू मीन बाय आर्ट फॉर माय सेक?
So radical romanticism is something that is going to give you a tough time, or that can obviously improve your impression there if you are talking about Lawrence. डेविड डिशेस की बड़ी अच्छी कमेंट्री है इसके ऊपर, लॉरेंस के ऊपर. डेविड डिशेस सेज कि अगर आप इसके नॉवेल्स को पढ़ते चले जाते हो ना, तो आपको एक ऐसा रेवोल्यूशनरी लीडर मिलता है जैसा कि हमें जेम्स जॉयस मिलता है अपने नॉवेल्स के अंदर. मगर जेम्स जॉयस ने अपने कॉन्शियस को उतनी गहराई तक नहीं लेके गया जितनी गहराई तक लॉरेंस ले गया. जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ जो हैं, वो दोनों जो लिखते हैं वो विजिबल इफेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, और लॉरेंस बिल्कुल मुख्तलिफ बातें करता. सो द वाइट पीकॉक टू वुमेन इन लव, अगर आप द वाइट पीकॉक से शुरू करो और वुमेन इन लव तक आओ, तो आपको लगता है कि आप एक टूर कर रहे हो, सिंबॉलिक अचीवमेंट्स देखते चले जाते हो. सो दैट इज इंपॉर्टेंट बाय द वे. दैट वाज अबाउट. एंड द लास्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली शायद आपसे ये पैनल कभी भी नहीं पूछेगा, बट लॉरेंस का जैसे ही नाम जहन में आता है, so everyone is worried about Lawrence and why Lawrence and sex. So लॉरेंस जो है वो जब लिखता है तो लॉरेंस एक रिलेशनशिप को डिपिक्ट करता है. लॉरेंस इज टॉकिंग अबाउट, ही इज कंसंट्रेटिंग ऑन मैन वुमेन रिलेशनशिप, और वो ये लिखता है कि मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं बोल्डनेस को बिल्कुल पसे पर्दा डाल दूं. द थिंग इज दैट ही वाज नॉट कॉन्शियस अबाउट द सेंसेस. यही वजह है कि उसकी द लेडी चैटरलेज लव जो है उस पे बैन रहा, द रेनबो पे बैन रहा. सो लॉरेंस को जब अगर आप फेवरेट राइटर के तौर पर ले रहे हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आपको लॉरेंस एंड हिज ट्रीटमेंट ऑफ दिस कमर्शियलाइजिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज एंड ऑल दिस थिंग्स को देखना पड़ेगा. एक नजर देख लीजिएगा. अगर आप फील करें कि इसके ऊपर आपको कोई साइड लेके इसके ऊपर डिफेंस करना पड़े, तो आप अपना कर सको आंसर. हम किसी टॉपिक को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ सकते कि वो पाकिस्तानी सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट है. डेफिनेटली हमें उसको थोड़ा सा टच जरूर देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा. तो इसको जरूर देख लीजिएगा. नेक्स्ट अबाउट मॉडर्न ड्रामा. In fact, modern drama, that is known as poetic drama. देखिए, एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा आप. जो 20th सेंचुरी 20वीं सदी का जो लिटरेचर है ना, इस लिटरेचर के अंदर हमारे पास दो चीजें हैं, एक्सेसिव रियलिज्म या नेचुरलिज्म. अगर हम इस सदी के आगाज वाले ड्रामास की बात करते हैं, तो हमारे पास जो है वो इब्सन का नाम है, शाह का नाम है, गैल्सवर्दी का नाम है, जो कि बहुत ज्यादा रियलिस्टिक थे. सो इसमें जो है मेरी रिकमेंडेशन है कि जब आप इस एज के मॉडर्न ड्रामा को तैयार करो, आपको इब्सन को जरूर तैयार करना चाहिए. ठीक है. और इसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो पर्सनैलिटी ओरिएंटेड जरूर रहे हैं. इसमें से क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरह से नहीं थे कि स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पास नहीं रहे. स्पेसिफिक क्वेश्चंस इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही पर्सनैलिटी के मतलब रहे हैं, वो है टी.एस. इलियट. सो टी.एस. इलियट. By the way, what is the complete name of T.S. Eliot? Do you know what is the complete name of T.S. Eliot? You may mention the name in the chat box. Oh yes, Thomas Jones Eliot. Yes, it was the complete name. Well, T.S. Eliot been the center of a lot many questions. T.S. Eliot is considered a greatest shaping force in the literature of 20th century. So the first question about T.S. Eliot is how T.S. Eliot changed the literature of 20th century. So when you're going to answer this question, you need to remember in 20th century, and the literature does not mean the poetry only. It means criticism, it means drama. So आपको पता चलना है, आप दो साइड ले सकते हो. आप या तो ये कह सकते हो कि उसने चेंज किया, या कह सकते हो कि उसने नहीं किया.
सो इफ यू आर टेकिंग ईदर साइड, आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि टीएस इलियट जो है वो मॉडर्निस्ट था, बट विदाउट एजरा पाउंड ही वाज नथिंग, ही वाज नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अगर आप एजरा पाउंड की रिविजन्स को इसमें से निकाल सकते हो, निकाल दो तो। सो टीएस इलियट इज अ पर्सन जो चीजों को, लिटरेचर को चेंज करता है अंडर द नेम ऑफ मॉडर्निज्म। और अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करना पड़े, आई एम अगेंस्ट टीएस इलियट, आई एम अगेंस्ट एजरा पाउंड। मुझे लगता है कि इन्होंने मॉडर्निज्म एज के साथ बड़ी ज्यादती की है। ये कैसी मॉडर्न एज है जिसके अंदर आप, जिसने मॉडर्न एज के ऊपर लिखा, एच जी वेल्स जैसे लोग हैं, आप उनको पीछे भेज रहे हो। जिन्होंने वाकईतन साइंटिफिक चीजों पर लिखा, जिन्होंने वाकई मॉडर्न एज लिखी, आप मॉडर्निज्म की बातें कर रहे हैं और आप ये बता रहे हैं कि ये जो लाइफ है ये बिल्कुल ही वर्स्ट लाइफ है। द लव सॉन्ग्स ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ को पढ़ के देखिए आप चाहो, आपको पता चलता है कि द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसकी कुछ इब्तदाई लाइनों में ही हमें ये सारी की सारी चीजें मिल जाती हैं। अगर आपने से इस पॉइंट को पढ़ा हुआ है लोगों ने तो वो जानते होंगे कि लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई। यहाँ तक पढ़ते हैं तो समझ में आता है, बड़ी मॉडर्न अच्छी बात है, क्या बात है, एक शाम है और इवनिंग स्प्रेड है, आसमान पे जो है वो बड़े खूबसूरत से नज़ारे हैं। Like a patient etherized upon a table, let us go through certain half-deserted streets, the muttering retreats of restless nights in one-night cheap hotels. So, what a sort of life it is. Like a patient. So this time the life is like a patient who's etherized upon a table. Etherized upon a table. जो पेशेंट उसकी बॉडी नंबनेस का शिकार है, वो मूव नहीं कर सकता है। तो क्या ये मॉडर्न लाइफ है? If this is a modern life, then it is really injustice, and I'm not going to support this idea that T.S. Eliot changed the literature of 20th century. उसने क्या किया? उसने cleverly medieval age का literature को पकड़ा। ये वही बात है जो जेफरी चौसा लिख रहा है, उनको मॉडर्निज्म के रैपर के अंदर पैक किया और प्रेजेंट करता है, वो ये मॉडर्निज्म है। इफ दिस इज दूसरी, इसकी जो है वो द वेस्टलैंड की इब्तदाई लाइनें आप ले लें, उसमें भी आपको ये रेफरेंस मिल जाएंगे। आप द हॉलोमैन को ले लीजिए, आपको ये रेफरेंसेस मिल जाएंगे। सो ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी कंट्री को, अपनी नेशनैलिटी को भी छोड़ दिया। ओके, सो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इनकी क्रिटिसिज्म को एक डिटेल्ड एनालिसिस दे दीजिएगा। और इसमें दो लोगों को, पहले नंबर पे हमारे पास टीएस इलियट है और दूसरे नंबर पे हमारे पास एजरा पाउंड है। टीएस इलियट जो है, नो डाउट कि एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन था, लिटरेरी क्रिटिक था। इसने बड़ी ढंग की चीजें भी लिखी, बहुत से क्रिटिक्स के मुताबिक बहुत अच्छा लिखा। और क्रिटिक था, क्रिटिसिज्म करता था। अब आपको पता होना चाहिए कि क्रिटिसिज्म की टाइप्स कितनी हैं, क्या ये क्रिटिक था या पोइट क्रिटिक था, कौन सा क्रिटिक था, आपको इन डिटेल्स का सारे के सारे का पता होना चाहिए। तो इन दोनों नेमों को जरूर देख लीजिएगा। सो देयर इज समथिंग अबाउट 20th सेंचुरी। और अभी जो है कुछ रीडिंग्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो मैक्सिमम क्वेश्चंस रहे। अभी हम जनरल क्वेश्चंस की बातें करेंगे जो कि ओवरऑल इंटरव्यू में जिससे मैक्सिमम रेफरेंसेस जो है वो लिए गए जिन कामों से, और इनको जो है आपने किसी कीमत पे इग्नोर नहीं करना है। द फर्स्ट वर्क दैट आई वांट कि आपको जरूर पढ़ना चाहिए और पता होना चाहिए, वो आपके पास यूटोपिया है। हमको ये तो पता होता है कि यूटोपिया टॉमस मूर ने लिखा। टॉमस मूर 1478 में पैदा हुआ। टॉमस मूर जो है लैटिन ये इसने एक्सप्रेशन दिया। स्टोरी क्या है यार, यूटोपिया के अंदर हुआ क्या था?
व्हाट इज यूटोपिया एक्चुअली? सो यूटोपिया जो है वो इसको लिखने का पर्पस क्या था? सो इसका पर्पस था, इसके पर्पस पे क्वेश्चन था जो एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन दैट व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ राइटिंग यूटोपिया? सो आप जानते हैं कि वो एक रिपब्लिक था और उसके आइडियल्स के ऊपर उसने बात करनी थी। सो यूटोपिया को आप डेफिनेटली पढ़ेंगे, ठीक है? और एंड द सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम दिस लिटरेरी वर्क यूटोपिया वाज हाउ यूटोपिया इज अ क्रिटिसिज्म। सो यूटोपिया क्रिटिसिज्म किस तरह से है? आप जानते हैं कि यूटोपिया इज मेंट बाय मूर नॉट मेरली टू बी द फिगमेंट ऑफ हिज आइडियलाइजिंग इमेजिनेशन। एज पर मूर यूटोपिया इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। सो इसको ये लगता है कि यूटोपिया जो है वो हमारे पास मॉडर्न सोशलिज्म के ऊपर एक ठीक ठाक तनकीद है। एक लेक्चर में तो हम कभी भी कवर नहीं कर सकेंगे इन चीजों को, लेकिन यूटोपिया को आप जो है वो जरूर देखिएगा, ठीक है? द सेकंड वर्क अबाउट दैट आई एम गोइंग टू रिकमेंड इज, जिसको आप जरूर पढ़ोगे और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन थे जनरली स्पीकिंग। अभी हम उन तमाम वर्क्स को देखेंगे, वी हैव अ लिस्ट जो आपने, दैट इज बाय जॉन लिली। जॉन लिली ने, आप जानते हैं जॉन लिली की जब भी मैं बात करूंगा, जॉन लिली वाज अ पर्सन born in 1554 and died in 1606. The years are important by the way sometime. If you're going to mention these years, 1554 का तो मैंने ये 1552 लिख लिया है, 1554। अच्छा जी, यूफिसिस जो है इसका काम है बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कभी भी आपसे डायरेक्टली यूफिसिस के ऊपर नहीं पूछेगा, वो ये कहेगा आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय एनाटॉमी ऑफ विच, हाउ एनाटॉमी ऑफ विच is relevant how anatomy of weight is relevant to today's age. So anatomy of weight, and the participants, they do not know what is anatomy of weight. Basically anatomy of weight is another name of euphysis. So anatomy of weight is highly important work. Euphysis or anatomy of weight is basically about learning and cultures. It is talking about Athens. Okay, so the whole story is there. You are supposed to completely read the story of Euphysis. Well, the next work that is important and that you need to cover, and that is Gorboduc. Okay. So, by the way, who is the writer of Gorboduc? Do you know who is the writer of Gorboduc? So, Gorboduc, oh yes, Thomas Norton and Thomas Sackville. Well, Thomas Norton and Thomas Sackville both are important because they were courtier. Okay. सो गॉबर्डक के मतलब कभी भी वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि गॉबर्डक किसने लिखी थी। द क्वेश्चन विल बी किस लिए लिखी गई थी। सो गॉबर्डक की इंपॉर्टेंस क्या है? तो एक क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन गॉबर्डक। सो दे आर, स्ट्रक्चरली स्पीकिंग, देयर 5 एक्ट्स। सो और ये पूछा गया था कि गॉबर्डक जो है वो किस ट्रेजेडी के मॉडल को फॉलो करती है। सो आप जानते हैं कि ये ट्रेजेडी ऑफ सैनिका को फॉलो करती है, ट्रेजेडी ऑफ सैनिका। और ट्रेजेडी ऑफ सैनिका जो है वो किससे रिलेटेड होती है? सैनिका ट्रेजेडी की क्या खसूसियात होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? दैट इज द रिवेंज, ब्लडशेड, all these are the characteristics of the Sanican tragedy. Okay. Another question about Gorboduc is how Gorboduc is a universal revenge-seeking tragedy. So, आप कुछ लिखना चाह रहे हैं इमरान स्क्रीन के ऊपर? इफ समथिंग इज इम्पोर्टेंट तो आप इसको जरूर लिख लीजिए, हम वेट कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है और आप सबके सामने या कुछ इम्पोर्टेंट आप शेयर करना चाह रहे हैं सबके साथ,
तो हम वेट कर सकते हैं, आप जरूर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें तो प्लीज। सो हम वेट कर रहे हैं, इफ यू राइटिंग समथिंग, इफ नॉट यू मे मेंशन इट इन द चैट बॉक्स। वेल, Senecan tragedy, because when you will talk about Seneca, you need to mention a lot more details about Senecan tragedy. In Senecan tragedy, violence is avoided on the streets. Remember one thing,